Good afternoon, everyone. Are you able to hear me? Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, audible. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, ma'am. Hello, am I audible? Yes, Meshara, you're audible. Go ahead. Yes. Vidya dadati vinayam vinyadyati patratam patratva mapnoti dhanadharmam tata sukham. Knowledge gives humility. From humility, one attains worthiness. From worthiness, one gains wealth. And from wealth, righteousness and happiness follow. Good evening, everyone. It is a privilege to gather today for our insightful webinar on revitalizing education through the Indian knowledge system, a part two holistic learning. As we embark on this journey, we are reminded by the shloka we just heard that knowledge is not just a tool but a pathway to humility, worth, prosperity, and ultimately a balanced and fulfilling life. This timeless wisdom from our heritage inspires us to explore how our rich Indian knowledge system can enrich modern education, emphasizing holistic development over mere academic success. The Indian knowledge system, with its profound insights in diverse fields such as ethics, spirituality, mathematics, and linguistics, has much to offer in today's educational landscape. We stand at a unique point in time where integrating this wisdom can foster a well rounded, values driven learning environment that prepares students not just for careers but for life itself. Today also marks a significant occasion, National Education Day, celebrated annually in India on November 11th to honor the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad, the first Minister of Education of independent India.
Maulana Azad envisioned an education system that fosters both intellectual and moral growth, cultivating responsible, compassionate citizens. His contributions continue to inspire us as we work towards a more inclusive, holistic approach to learning, which aligns seamlessly with the goals of our session today. And it gives me great pleasure to introduce our esteemed speaker for this session, Dr. Rajesh Sharma, Principal of the Ivy Global School in Bhopal. Dr. Sharma is a distinguished CBSE master trainer and an experienced helpline counselor with over 18 years of dedicated service. Dr. Sharma's accolades speak to his excellence and influence. In addition to being honored with the Best Teacher Award and the Computer Literacy Award presented by former President Dr. APJ Abdul Kalam, he has also received the prestigious Integration of International Learning in School Award from the British Council in 2019 and Dr. Shyama Prasad Mukherjee Edu Leadership Award by Rethink India, New Delhi in 2021. His other recognitions include the CBSE Chairman's Appreciation for his decade long dedication to counseling services and numerous awards from national and international organizations. His vast expertise in education and his commitment to student well being make him the perfect guide for today's discussion. Dr. Sharma's insights into the Indian knowledge system, coupled with his practical experience in contemporary education, will provide us with a unique perspective on how to make our educational practices more meaningful and transformative. Thank you, sir, for joining us today. We are truly honored to have you with us. So, without further ado, let's dive into the exploration of how we can bridge our rich past with the needs of the present to create a holistic future for our learners. Thank you. Over to you, sir. Sir, please unmute yourself. So thank you, Baisara, for that fantastic introduction. I will be just sharing my PPT, and that should be happening. Is it visible? Just confirm. No, sir, it's not visible. Okay. Uh, so the moment you get it, please confirm with me that it is visible. Right? Good afternoon, sir. No, sir, it's not yet visible. Yeah. Now also? No, we can't see from my end. It's not visible. I think there seems to be entire screen coming. Is it? Actually, I typed. No, sir. Mhm. But it's showing here why. Um, is it now? Yes, sir. available? Yeah, I think. Okay, thank you. So now as we start with the Indian knowledge system, I would like to convey that this has started since long, and because of time paucity, I will be talking about ancient Indian system of education, and here especially the
Vedic education will be the main topic. So, contrary to the different many nations, we had a very, very well developed education system, not like West that it is grown now. And this was right from the 5,000 years back. Okay, we had, especially it was known as Vedic knowledge or Vedas, and especially four Vedas that you may be knowing, we'll discuss. And the meaning of Veda itself is knowledge. So the vital role was to uplift the education's purpose was basically to uplift the society, to secure a Sir, progressive. sorry to interrupt. I think the PPT is still not visible. I think you Is said. it? No, yeah, it's not visible. But it okay, I'll stop sharing and try again. Maybe because of the network problem. Uh, The network is okay. okay, Yeah. So screen sharing, sir. same. I am pressing that screen share. Uh, yes, ma'am. Please, please share screen and the same in the front itself. It is there, no? Present now. Yeah. That's what I think. Is it over? There, that's what I was doing the same thing. Not about visible. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, is it visible now again? Yes, sir, it's visible. Oh, Yes, thank you sir. so much. Visible. And please keep on feedback because this is the problem at times. The technology I can't confirm. So you have to please give me feedback in between. The point what I was starting that the knowledge of ancient India was basically for the upliftment of society as a whole to secure a balanced harmony between the Purusharth, especially Purusharth means doing your best. You can convert it like if you want to translate it today's concept of ikigai in Japan. It is same Purusharth we had earlier. The significant concept of development upholds the legitimacy of man's desire for rather economic security, that is Arth, Dharma, Kam, and Moksha. These were the four basic reasons. If you can see here, the karma means bodily needs, Arth means material needs, Moksha means spiritual well-being, and of course social and moral order. That was the dharma to achieve. That was the whole concept was to achieve this dharma through education. Okay, and if you see here, in it started around 3rd century BC, and the whole aim again to repeat training of completeness of life means how to live life, जिंदगी कैसे जीनी है ये बच्चों को सिखाया जाता था मेनली सो दैट करेक्टर स्पेशली जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे उसको हम कैसे खुशी खुशी आगे सहन कर सकें और आगे बढ़ते रहें सो वेदास पुराणास आयुर्वेद योगा और अर्थशास्त्र दे आर ऑल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया व्हाट वाज द एम आखिर लक्ष्य क्या था जिनको उस समय पे जो शिक्षा नीति रखते थे उसकी शिक्षा पद्धति में क्या था करेक्टर फॉर्मेशन सबसे पहले चरित्र और वो बहुत उसको प्रमुखता से पढ़ाया जाता कि आपका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए ऑल राउंड डेवलपमेंट
वहां पे बच्चों को फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, हर तरीके से उसको अच्छा बनाया जाए, उसको सिखाया जाए, जो सोसाइटी में जाए तो वो कुछ वहां पे अच्छे काम कर सके, ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, कंट्रीब्यूट कर सके. Intellectual development of the individual, spiritual development of the individual, preparing for life. तो प्रिपेयरिंग फॉर लिविंग मीन्स जो भी, जब वो पहले 4 आश्रम भी मानते हैं ना, जैसे ब्रह्मचर्य के बाद जब गृहस्थ में बच्चा जाएगा तो गृहस्थ में कुछ करे, कैसे जिंदगी जिए अच्छी तरह से, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग कल्चर, और संस्कृति को कैसे सीखे और आगे उसको बढ़ा सके. System of education was that when it was different from today's education system. How? Because it used to occupy very important place in the Indian system. और उसका एग्जाम्पल मैं आपको एक और बताता हूं कि जब लॉर्ड मैकॉले आया तो ही टूर्ड होल इंडिया, पूरे भारत में जब गया तो he found in every village there was a school. Okay, so these are the 4 Vedas: Rigved, Yajurved, Samaved and Atharvaved. The students' life in Vedic period began with the Upanayan Sanskar. What is Upanayan Sanskar? Means it was performed whenever the student reaches to Gurukul. और गुरुकुल में जो गुरु हैं वो उस बच्चे के उपनयन संस्कार करते थे, और वहां से बच्चे का नाम ब्रह्मचारी वो होता था, और उसको द्विज भी कहते थे. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो द्विज सेरेमनी. द्विज माने सेकंड बर्थ. वो अब उसका पहली जन्म कब हुआ? जब माँ के पेट से आया. दूसरा जन्म कब हुआ? जब वो शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास गया. तो आप समझ सकते हो ना कितनी प्रमुखता और महत्वपूर्ण ये दूसरी स्टेज थी. द होम ऑफ द टीचर और आचार्य वाज सेंटर ऑफ लर्निंग. सबसे चीज कि बच्चा गुरु के यहाँ पर रहता था, वहीं पे सब कुछ सीखता था. और एज लिमिट उपनयन संस्कार की अलग अलग उन्होंने बताया. वर्ण में क्या था? ब्राह्मण्स के लिए 8 साल थी, क्षत्रिय के लिए 11 साल, वैश्य के लिए 12 साल. इस तरह का ये सिस्टम एक रहा, विच यू कैन सी. अब सबसे इंपॉर्टेंट कि करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, कि उस समय की शिक्षा में क्या प्रमुखता थी, कि वेदास वर द ओल्डेस्ट लिटरेचर. वेदास आर द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड. ऋग्वेदा is the mirror of ancient culture and civilization, and this is suitable for every age. जो शिक्षा क्या करती है? परफेक्शन इन एजुकेशन, पूरी तरह से बच्चे को एक अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार करती है. The main aim of education was to liberate the soul from worldly bondages. सबसे ज्यादा उसका प्रयोग क्या था? कि व्यक्ति कर्म पर ध्यान दे. आपने जैसे गीता का श्लोक सुना होगा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हमें अपनी ड्यूटी, कर्तव्य पर ज्यादा ध्यान देना है. फल कुछ भी हो सकता है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. तो हर व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ हो, अपनी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाए. ये पूरी शिक्षा की कोशिश होती थी. इक्वल राइट्स टू एजुकेशन फॉर ऑल, और हर किसी को शिक्षा का अधिकार था. आइडियल ऑफ टीचर, जो आचार्य होते थे या गुरु होते थे, उनके अपने इतने ज्यादा सम्मानित माने जाते थे, क्योंकि उनके विचार, आचार, हर तरह से वो एक मानक से. उसके साथ साथ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ द फैमिली, जब उसके हर किसी के परिवार में शिक्षा को बहुत महत्व देते थे. इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एजुकेशन, और संस्कृत वाज द मेन लैंग्वेज. और आपको एक चीज संस्कृत की शायद पता भी हो कि संस्कृत पूरे विश्व में ऐसी एक भाषा है जिसकी ग्रामर अपने आप में कंप्लीट है, जिसकी शब्दावली अपने आप में पूरी है, जो कि और भाषाओं में आपको नहीं मिलता है. वहां अभी भी चेंजेस हो रहे हैं. फिर
जब शिक्षा लेने के लिए बच्चा गुरु के आश्रम में पहुंचा था, गुरुकुल में, तो 3 तरह के या 3 ड्यूरेशन की वहां पे डिग्रियां होती थी, वसु, रुद्र और आदित्य। तो रुद्र वसु में क्या होता था कि 24 साल, जैसे जब वर्णाश्रम में क्या था, ब्रह्मचारी 25 साल तक, 25 साल तक गृहस्थ, 25 तक वानप्रस्थ, और अगले 25 फिर उसको अपने वानप्रस्थ के बाद में संन्यास आश्रम में रहते थे। अगर कुछ लंबी शिक्षा होती थी तो वो रुद्र 36 साल तक गुरु के आश्रम में रहते थे या गुरुकुल में रहते थे, और कुछ शिष्य 48 साल मतलब ब्रह्मचार्य और गृहस्थ जीवन दोनों ही गुरु के आश्रम में गुजारते थे। अब आता है क्यूरिकुलम कि उसमें पढ़ाते क्या होंगे। तो पढ़ाने का जो सिस्टम था, दिस पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय स्टडी ऑफ वैदिक लिटरेचर, हिस्टोरिकल स्टडीज, स्टोरीज ऑफ हीरोइक लाइफ। सबसे ज्यादा जो जरूरी होता था वो था कि उस समय के जो महान योद्धा हैं, जो महान गणितज्ञ हैं, जो महान ऋषि थे, मुनि थे, जिन्होंने कुछ अपने अलग रिसर्च की हुई थी, उनके बारे में जानना। डिस्कोर्सेज ऑन पुराणास एंड फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ द सिलेबस। Student had necessary to obtain knowledge of matrix, arithmetic, supplemented by knowledge of geometry. Students were given knowledge of all 4 Vedas, that is Rigved, Yajurved, Samved and Atharvaved. The syllabus took with it compass subject like spiritual as well as materialistic. मतलब बच्चे को आध्यात्मिक, सांसारिक, पारिवारिक हर तरह की शिक्षा दी जाती थी, और इसमें उनको गणित विशेष तौर से सिखाया जाता था, दर्शन, फिर आप देखें उसमें नॉलेज अबाउट, और दूसरी जो योनियां हैं, घोष के बारे में भी बताया जाता था कि नॉलेज अबाउट वेदास, ग्रामर, अर्थमेटिक, नॉलेज ऑफ गॉड्स, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, knowledge of ghost, astronomy, logic, philosophy, ethics, conduct, ये सारी की सारी चीजें जो आप सोचिए जीवन अच्छी तरह जीने के लिए जो जो आवश्यक है, प्लस एक मनुष्य में जो जो उनके इंटरेस्ट का हो सकता है, जो उनसे जुड़ा हो सकता है, चाहे वो दर्शन है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी है, चाहे वो मैथमेटिक्स है या ग्रामर है, ये सारे के सारे उस क्यूरिकुलम और सिलेबस का पार्ट होते थे। द richness of syllabus was responsible for the creation of ब्राह्मण लिटरेचर इन दिस। तो जो उस समय के जितनी हमें लिखाई मिलती है, जो पुस्तकें मिलती हैं, जो एपिक्स हैं, जो रामायण, महाभारत और उस तरह के भाष्य हैं, वो यही दिखाते हैं कि उस समय की जो ज्ञान की पराकाष्ठा में हम रहते थे। अब पढ़ाई कैसे होती थी, पेडागोजी क्या थी उस समय पे, जब हम आज बात कर रहे हैं तो उस समय की पेडागोजी क्या रही होगी। तो पेडागोजी थी, दे वर मेनली 3 स्टेप्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम। सबसे पहले श्रवण, श्रवण मीन्स सुनना, सुन के जो श्रुति भी उसको कहते हैं, कि मीन्स लिसनिंग टूवर्ड द टेक्स्ट एज अटर्ड बाय द टीचर। जैसा गुरु ने बोला उसी चीज को हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, दोहराना। तो गुरु मंत्र बोलते थे पहले, उसी मंत्र को फिर शिष्य सब लोग दोबारा बोलते थे। बाय दिस मेथड ऑफ एजुकेशन नॉलेज वाज कंजर्व्ड एंड ट्रांसमिटेड टू द ऑनकमिंग जनरेशंस टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो एक जनरेशन ने श्रुति से, श्रवण से वो सीखा, याद किया, और फिर उन्होंने वो अगली पीढ़ी को पास किया। सेकेंड स्टेप वाज मनन। मनन माने इंटरनलाइजिंग, एसिमिलेशन, थिंकिंग और एनालिसिस। तो उस चीज को जो पढ़ते थे उसी चीज को अपने अंदर समझना, इंटरनलाइज करना और उसको जीवन में प्रयोग लाना। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑन द टॉपिक, और उसमें क्या क्या अच्छाई है, उसकी आलोचना, समालोचना, सारी की सारी चीजें उसमें मनन में होती। फिर थर्ड स्टेप वाज निधिध्यासना, मतलब मेडिटेशन, कि हमने जो पढ़ा, जो कुछ
सैद्धांतिक रूप से बताया, क्या वो वास्तविकता में है या नहीं. The truth is realized and attended. It was considered that indispensable for realization of the supreme reality. जब शिष्य को ये कोशिश करता था वो अपने ध्यान में बैठ के, और यहाँ पे मैं आपको अगर पीछे एक स्लाइड दिखाऊं, ये जो मैंने शुरू में दिखाई थी आप देखिए, तो ध्यान की ये 8 स्थितियां अगर आप दाहिने साइड में देखें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये यहां तक वो अपने मेडिटेशन में जाते थे और उसके बाद में चीजों को समझने की कोशिश करते थे. तो कहने का मतलब कि आप केवल ये नहीं कि श्रवण किया और छोड़ दिया, आपको पूरी तरह से अपने मन से वहां पे गुरु के सामने बैठना होता था, चीजों को सीखना है, सुनना है, उसको दोहराना है, दोहराने के बाद फिर उन पे मनन करना है, फिर मनन करने के बाद फिर उसको और ध्यान करना है, ध्यान में लाना है और देखना है कि कितनी सत्यता है, जीवन से उसका क्या संबंध है. हमारी शिक्षा में आजकल अगर देखें, जो मेरे विचार में, कि हम उसको जीवन से जब तक नहीं जोड़ते हैं बच्चों को याद नहीं होता है, और केवल थ्योरी पढ़ा देने से वो सब भूल जाते हैं. जबकि वहां पे क्या था, थ्योरी सुनाई जाती थी, फिर उस पे आलोचना होती थी, उसको समझा जाता था और फिर उसको वास्तविक जीवन से जोड़ने की कोशिश होती थी, इसलिए वो सबको याद रहता था. तो एनसी सिस्टम टीचिंग वाज लिसनिंग श्रुति, परसेप्शन वाज डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग, कि हर एक को अपने हिसाब से चीजों को समझना है, परसीव करना है. फिर लेक्चर, डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन. आप सबने एक शब्द सुना होगा हिंदी में, शास्त्रार्थ. डिबेट वाज द मेन वे टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. और सबसे अच्छी बात ये थी कि शास्त्रार्थ हर स्तर पर होता था, गांव से लेके बड़े शहर तक, और बड़े शहर से जाके दूसरे प्रदेशों और देशों के साथ में भी जो ज्ञानी लोग होते थे वो डिबेट करते थे, शास्त्रार्थ करते थे और अपने अपने ज्ञान का इसी तरह से एक दूसरे को बताते थे. फिर द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. अब देखते हैं कि उस समय के स्कूल कैसे होते थे. तो सबसे पहला स्कूल कौन से थे? गुरुकुल. द हाउस ऑफ गुरु वाज सिचुएटेड नेचुरल सराउंडिंग अवे फ्रॉम द नॉइज एंड बसल ऑफ सिटी. शहर या गांव से दूर जंगल में गुरु का घर होता था, जहां पर गुरु अपने परिवार के साथ रहते थे और वहीं पर शिष्य जाकर के शिक्षा प्राप्त करते थे, चाहे वो कोई भी हो, राजा का बेटा हो या कि किसी गरीब का बेटा हो, उनको जाके गुरुकुल में ही रहना होता. और गुरु के आश्रम में जो कुछ भोजन है वो खुद भी बनवाते थे और उसी में से सबको खाना होता था एक साथ बैठ के. तो इसीलिए पेरेंट्स सेंड देयर वर्ड दैट बाय एज 5, तो जो उपनयन संस्कार था वो 5 साल के बच्चों का करीब होता था. और celebrating their उपनयन संस्कार, people lived under the roof of their guru under the direct supervision of the. तो गुरु के पास में ये सब बच्चे इस तरह रहते थे जैसे गुरु के अपने ही बेटे बेटियां हैं. गुरुकुल नेम indicates the family of the teacher, isn't it? Gurukul. So they all used to be the family of the teacher. His residence where students used to stay during period of study. Gradually, Gurukula were extended to include other number of buildings. However, institution built up around the family of the teacher. The primary duty of वहाँ पे शिष्य के क्या कर्तव्य होते थे? To serve the teacher and his family. The students were like son of the teacher and whole institution. सारे के सारे बच्चे, पूरा गुरुकुल मतलब एक परिवार की तरह रहता था, हर बच्चे को हर चीज करनी होती थी. तो इस तरीके से सारे आगे बढ़ते थे. एंड दे मस्ट फाइंड ए टीचर and live with him as a member of the family. The knowledge
लाइक भगवत गीता में क्या था, ऑबिडियंस बाय क्वेश्चनिंग एंड सर्विंग द टीचर। बिल्कुल उनकी शरण में बच्चे को या स्टूडेंट रहता था, जिससे वो पूरे का पूरा, और संस्कृत वाज द लैंग्वेज टू लर्न। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, गुरुकुल के बाद में आता है परिषद। सॉरी, गुरुकुल के बाद जो बड़े होते थे, गुरुकुल से बड़े परिषद होते थे, जहां पर बिगर इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी के समान आप मान सकते हैं। वो परिषद में फिर बच्चा जो गुरुकुल से पास होके परिषद में जाता था। बिगर इंस्टीट्यूट्स विद सेवरल टीचर यूज्ड टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट। तो वहां पे क्या था, जो हम स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहां पर परिषद में उपनिषद और बाकी जो भाष्य हैं वेदों के, उन चीजों को समझते थे, उनके दर्शन, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम, और ये अलग अलग जगह पर जहां पर ज्यादा नंबर में लोग बाग रहते थे, वो इंस्टीट्यूट बनाई गई और इसको बोलते थे परिषद। इट करेस्पॉन्डेंस टू द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिफरेंट के, एक विश्वविद्यालय की जो आज बात अवधारणा है, वो परिषद की पहले होती थी। फिर सम्मेलन लिटरली मीन्स टुगेदर ऑन ए पर्टिकुलर, जैसे कॉन्फ्रेंस होती है, उससे ही बड़ा जो होता था परिषद से बड़ा, वो कॉन्फ्रेंसेज होती, जिसमें इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन होता था, डिस्कशन होते थे, स्कॉलर जो अपनी अपनी रिसर्च है वो सब डिस्कस करते थे, एंड दे वर रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। अब मैं आपको कुछ जो बहुत ही फेमस हमारी यूनिवर्सिटी रही है, जो भारतीय शिक्षा पद्धति का स्तंभ थी, उनके नाम आपके सामने है। तक्षशिला सबसे ज्यादा जिसका नाम लिया जाता है, मिथिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, जगद्दला, उदयपुरी, नाडिया, मदुरा, कांची और बनारस, ये हमारे विश्वविद्यालय रहे हैं पुराने, जहां पर बहुत तरीके से बच्चे और लोग सीखते। और इसमें सबसे ज्यादा जो बता रहे हैं कि कैसे पढ़ते थे, जो फुल फ्लैज तक्षशिला का वाज नोटेड सेंटर फॉर लर्निंग। तक्षशिला में क्या था, अलग अलग डिपार्टमेंट थे, और उन अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें सिखाई जाती थी, उसको आप देखिए एक बार के लिए। सबसे पहले था जो जगह रहती थी जहां सीखते थे, अग्नि स्थान, द प्लेस वेयर, जहां हवन होता था, जहां पर प्रेयर होती थी, जहां पे पूजा होती थी, वो एक स्थान हर विश्वविद्यालय में था। फिर होता था ब्रह्म स्थान, डिपार्टमेंट ऑफ वेदांत। फिर था विष्णु स्थान, जहां पे डिपार्टमेंट में क्या सिखाते थे, राजनीति और राजा नीति, कि हाउ ए किंग शुड रूल ए कंट्री, कि राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो प्रजा का कैसे ध्यान रखे, राजनीति का शुद्ध रूप क्या होना चाहिए। फिर था महेंद्र स्थान, मतलब मिलिट्री सेक्शन, कि जहां पे हमारे जो आजकल के बोलेंगे ना डिफेंस एरिया रहेगा, जहां पर फाइटर्स और मिलिट्री पर्सनल विल बी देयर। फिर था वैवस्वत, डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। फिर सोम स्थान, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। गरुड़ स्थान, सेक्शन डीलिंग विद ट्रांसपोर्ट एंड कन्वेयर, कि जहां गरुड़ स्थान में वो अलग अलग तरीके से कैसे आने जाने के जो साधन है उनके बारे में। और कार्तिकेय स्थान, सेक्शन टीचिंग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू फॉर्म पेट्रोल बटालियन, ट्रेनिंग इन द आर्मी। तो ये आपको डिपार्टमेंट समझ में आए हुए, कितने डिपार्टमेंट बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में होते थे उस समय, जहां पे अलग अलग चीज शिष्यों को सिखाई जाती थी। फिर एक पाणिनि, बहुत बड़े हमारे ऋषि हुए हैं, जो 7वीं शताब्दी के हैं, और कौटिल्य जिसको अर्थशास्त्र के लिए याद करते हैं, फिर वो 4वीं शताब्दी के हैं। फिर चरक, जिन्होंने बहुत सारा हमारे मेडिकल साइंस के लिए, और स्पेशली बताते हैं कि जो सर्जरी हम करते हैं, ये सब कहाँ के स्टूडेंट थे, तक्षशिला के। और सूत्र पीरियड विच वाज कंप्लीट विदाउट नो कंप्लीट एविडेंस ऑफ ग्रामेटिकल लिटरेचर
प्रेजेंटेड बाय पाणिनि, और जो जितने के व्याकरण आया तक्षशिला से वो पाणिनि ऋषि ने दिया था। अब शिष्यों की क्या क्या कर्तव्य होते थे, तो उसमें सबसे पहला आता था भिक्षा, बैगिंग आल्म्स। मतलब जितने बच्चे गुरुकुल में जाते थे उनको सबसे पहली ड्यूटी होती थी कि वो गांव में या जो आसपास गृहस्थ हैं उनके घरों से जाके भिक्षा मांग के लाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुकुल में इतनी सब साधन नहीं होते थे। जो गुरुकुल बने होते थे वो गांव के पास होते थे और वहां के लोगों की सपोर्ट से ही वो चलते थे। तो ब्रह्मचारी जो आते थे शिक्षा लेने के लिए, उनका सबसे पहला काम कि गुरुकुल में जितने हैं उन सबके भोजन के लिए वो गांव से भिक्षा लेके आएंगे। और इसका एक बहुत बड़ा मकसद था। भिक्षा लेने से मतलब क्या है कि सबसे पहले इट प्रोड्यूस द स्टूडेंट स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रिनंसिएशन, कि जो एक मान लीजिए एक बच्चा जिसका पिता राजा है या मंत्री है, तो वो अपने आप में बहुत कई बार घमंड हो सकता है। उसको वो एक तरीके से विनयशील बने और बिना अभिमान के अपने जीवन को समझे, शिक्षा ग्रहण करे। इट मेक्स हिम ईगोलेस। जो हर व्यक्ति को अपनी ईगो होती है, अभिमान, तो वो जो अभिमान की स्थिति है वो खत्म हो। व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मैं भी दूसरों की सहायता से रहता हूं, मैं कोई अकेला नहीं हूं। फिर इट हेल्प्स टू कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड डीपर लॉयल्टी टू द गुरुकुलर सिस्टम। और इससे क्या होता था कि उसका जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत सारा निखार आता था। क्योंकि अभी जब शुरू में जैसे महेश ने बताया ना, विद्या ददाति विनयम, तो विनय देने की कैसे आएगी? जब सबसे पहले उसको अपने अभिमान को खत्म करना है। और अभिमान कैसे खत्म हो सकता है? जब वो बच्चा जाता था गांव में जाके भिक्षा लेके आता था। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे हर एक किसी से सहायता चाहिए और वो सहायता मैं सहर्ष विनय पूर्वक ले रहा हूं। तो ये जो एक मन में भावना आती है, वो भावना से सबको विनयशील बनाती है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ रिचुअल टू कल्टिवेशन ऑफ इम्पर्सनल रिलेशन। और इससे क्या है, त्याग की भावना भी आती है। त्याग की भावना से मतलब क्या है कि वो हम जो भर के रखना चाहते हैं ना आजकल हर चीज स्टोर, वो भावना, वहां पर त्याग की भावना आती है कि ये भी दूसरों ने दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है, तब मुझे रखने की आवश्यकता है। It taught student to feel how unattached he is to any tie. कोई बंधन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों की और स्टूडेंट्स की ये ड्यूटी होती थी। और साथ के साथ क्योंकि वो किसी चीज से लगाव नहीं है, तो वो अपने आप में स्वतंत्र भी रहते थे कि कहीं ना कहीं से हम अपना इंतजाम कर लेंगे। दूसरी चीज थी टेंडिंग द सेक्रेट। हर किसी को होम, अग्निहोत्र या हवन बहुत आवश्यक था। ये हवन की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि सबको मिलके प्रकृति का भी ध्यान रखना पड़ता था। They used to go and collect fuel and fetch for Gurukula for tending sacred fire. Worship of Agni by offering choice objects had much spiritual cultural significance. Agnihotra ceremony was performed in Gurukula to enable students to understand reality. तो ये क्या था, उन सभी गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक तो वहां पर भी जो मैंने समझा कि श्लोक बोले जाते थे, तो श्रुति और श्रवण से बच्चों को फिर से वो रिवीजन होता था। शाम को सुबह श्लोक गुरु बोलेंगे, जो सीनियर्स थे वो सब श्लोक बोलते थे और जो छात्र हैं उनको उसको दोहराना पड़ता था। उसके साथ साथ पूरे वातावरण की शुद्धि होती थी। साथ के साथ जो भी आसपास की चीजें हैं उन चीजों को कैसे हम ध्यान रखें, वो भी हवन के द्वारा किया जाता था। तो इस तरह से सारी की सारी
जो एग्रीकल्चर है, जो एनिमल हस्बेंड्री, मतलब गाय है, जानवर है, उनका भी ध्यान रखा जाता था। और ये सब के सब स्टूडेंट या जो वहां गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को करना पड़ता है। फिर आता है डिसिप्लिन, अनुशासन। इट वॉज बेस्ड होल लाइफ, जो गुरुकुल की जीवन था वो पूरे के पूरा अनुशासन पर ही निर्भर था। बिकॉज उससे, अनुशासन से क्या होता था, आत्म अनुशासन और आत्म संयम की स्थिति बच्चों को सिखाई जाती थी। उससे ये क्यों आवश्यक था? क्योंकि जब तक आत्म संयम और आत्म अनुशासन नहीं होगा तो व्यक्ति अपने जो ऊर्जा है उसको केंद्रित नहीं कर पाएगा, और जब केंद्रित नहीं कर पाएगा तो सीखेगा कैसे? तो उस समय के अनुशासन में क्या था? इंक्लूडेड अर्ली राइज, प्रेयर, ड्रेस कोड, फूड, स्लीप, बाथ। ओके, तो जो आपने एक श्लोक भी सुना होगा, जो विद्यार्थी पंचलक्षणम बोलते ना, अल्पाहारी त्यागी, उस तरह से वो संस्कृत में कोई, अभी आपको सुनाऊंगा उसको भी। तो ये उस समय का डिसिप्लिन और अनुशासन था। अब गुरु कैसे होते थे? गुरु एंजॉयड प्रेडोमिनेंट प्लेस नॉट ओनली इन गुरुकुल बट इन द एंटायर सोसाइटी। गुरु को बहुत ऊंचा दर्जा उस समय पे दिया जाता था, उनको हमेशा पूज्य माना गया है। ग्रेट गाइड फॉर ऑल एंड ट्रीटेड एज पेरेंट ऑफ द, और वो एक पिता के समान, उनका हमेशा हर समाज में सम्मान होता था। His people showered all love, affection and used to teach them whatever he knew। और गुरु का क्या काम था कि जो कुछ ज्ञान उसको होता था वो हर पात्र शिष्य को वो सिखाता था। Before doing he always tested the deservingness। जो आपने, हम लोगों ने महाभारत में देखा ना भाई, 5 पांडव थे, दुर्योधन, तो हर पांडव को उन्होंने, द्रोणाचार्य ने तीर चलाना नहीं सिखाया, वो केवल अर्जुन को सिखाया। हर पांडव को गदा चलाना नहीं आता था एक्सपर्ट, वो भीम को सिखाया, दुर्योधन को सिखाया। तो इसी तरीके से जो डिजर्विंग स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में उसका ओरिएंटेशन होता था, आजकल हम करते हैं ना कैरियर गाइडेंस करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो टीचर हमेशा एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आपने वो कहानी भी सुनी हो द्रोणाचार्य की, कि एक दिन वो सारे कौरव पांडवों को लेके गए और उन्होंने पेड़ के सामने द्रोणाचार्य ने खड़ा किया और एक एक करके बुलाना शुरू किया कि भाई तुमको क्या दिख रहा है? तो किसी ने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे आम दिख रहे हैं। एक ने बोला मुझे चिड़िया भी दिख रही है। तब अर्जुन का नंबर आया तो बोला मुझे चिड़िया की केवल आंख दिख रही है। तो वो क्या हुआ, उसके डिजर्विंगनेस हो गई, उसकी इंटरेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गई कि हाँ ये है जिसको तीर चलाने की शिक्षा में दूंगा। He was more respect than the king in the society। और राजा महाराजाओं से भी ज्यादा सम्मान गुरु का होता था। इवन राजे महाराजे भी उनका सम्मान करते थे हमेशा। अगर मान लो किसी राजा के दरबार में कोई गुरु पहुंच जाए तो राजा अपने सिंहासन को छोड़ के पहले उनके चरण स्पर्श करते थे, उनको अपने सिंहासन पर बिठाते थे। तो ये क्या था, एक टीचर का सम्मान था इतना। Guru was given significant place because without him it was impossible to attain। क्योंकि केवल गुरु ही शिक्षा का स्रोत था। इसलिए भी क्योंकि उस समय पे कोई इंटरनेट और ये सब चीजें नहीं थी, किताबें भी नहीं थी। जो गुरु को ज्ञान होता था उसी ज्ञान से सभी शिष्यों को वो प्रकाशित करता था। He used to bring light wherever there was darkness। Thus people always felt his necessity wherever there was difficulties। और कोई भी समस्या आए, किसी भी तरह की, पारिवारिक, राजनीतिक या किसी देश ने किसी दूसरे देश के साथ में भौगोलिक, तो उस समय पे गुरु को ही बात की जाती थी, उन्हीं से संवाद किया जा रहा। अब एक और बहुत अच्छी चीज उस समय पे क्या थी कि इवन वुमेन एजुकेशन
स्त्रियों को वो उतना ही मिलता था पढ़ाई का मौका जितना कि पुरुषों को मिलता था. गर्ल, तो उपनयन सेरेमनी वाज परफॉर्म and their education used to start. They were also required. तो उनका भी एक ब्रह्मचर्य जीवन होता था, गृहस्थ होता था. उनके वेद और फिलोसफी, दर्शन, उन सबको उनको पढ़ाया जाता था. और जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल राइट साइड में अगर आप देखें ना, गार्गी, अनुसुईया, भारती, जो मंडन मिश्र का अगर आपने नाम सुना हो, बनारस में शंकराचार्य से जिनका शास्त्रार्थ हुआ था, उनकी पत्नी भारती. तो ये सबको मौका मिलता था पढ़ने का. तो वुमेन एजुकेशन वाज इक्वली गिवन इंपॉर्टेंट. गायत्री मंत्र वगैरह भी पढ़ाए जाते थे. और कुछ फैक्ट में आपको, क्योंकि अब समय भी है, फिर क्वेश्चन आंसर रखेंगे. हिंदू देवर एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट हॉस्पिटल्स, सबसे पहले जिन्होंने अस्पताल या इलाज के लिए जगह की वो इंडिया में थी, भारत में, तक्षशिला. और तक्षशिला के लिए कहा जाता है कि ये ज्ञान और मिलिट्री ट्रेनिंग का सबसे प्रमुख स्थान था. इट वॉज प्रोविंशियल मैरीटाइम एक्टिविटीज एंशिएंट. तो सबसे पहले साउथ एशिया में, इजिप्ट, ग्रीक के पहले हमारे यहाँ पर ये सब चीजें थी. और लास्टली आई वुड लाइक टू से कि इट वॉज students education, they were able to develop their holistic personality. उनको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से सिखाया जाता था. और यहाँ पे मैं, कोई किसी का प्रश्न है अभी? उसके अलावा मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ. Anybody has any question? मैसिका, अगर नहीं है तो मैं जो दूसरी स्लाइड ये दिखाना चाहूंगा, जिसमें मैंने कुछ इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा है. आर यू एबल टू सी इट? No, sir. No, sir, it's not visible. Yes or no? No, sir. No. Okay, thank you. I just again rearrange. Give me a second, just I'm getting onto it. Okay. Is it there now? Yes, sir. Okay, thank you. Yes. Quickly, Yes. I would show you the contribution of Indian people. This is the Macaulay's report in 1835 when Macaulay came to India. I did not find any beggar anywhere, illiterate person. Okay, so this is just for your information. And then he told that if we want to control India, we must tell them that Sanskrit is of no use, English is the only language, and that's where everything started. Now see these are the 9 universities at that time which were there in India. Okay. Now we talk of amputation and replacement of the arms in Rig Veda. If you see here, this is one of the Queen Vispala. Her leg was cut and an artificial leg was put in her foot. Okay. Sir, And she sir, fought sorry very to hard. interrupt. Screen is not visible, sir. Sorry to interrupt. Okay, I'll again restart maybe. So thank Sir, you for click on that information. screen, which is
That's what I expect. Sir, you have to maximize that slide screen only. Is it there now? No, Are you sir. able to hear or see the slide? No, No, sir, sir. still not visible. Oh. Uh, This is the participant panel. say again. I am again stopping and then we'll restart. Is it there now? Yes, sir, it's Yes, sir. visible. Now it is Okay, visible. now full screen. Full screen Yes, is sir. coming. Yes, it's Yes, sir. visible now. Thank you so much. So I am really thankful and grateful to all of you. So this is one of the thing which I wanted. The next is we all talk of atomic structure. This was the Parmanu. The concept was given by Maharshi Kanar 2,700 years back. Okay, not like Rutherford and all Britishers, those who have been given credit because India was under British rule, so the credit was given to them. And of course, rulers of different. That is, if you see now here, this is also education. This is the temple made of granite. If you see the loin face, there is a ball inside the mouth, and the link, they are all made of stone. And there was no computer or drills like this which are available today. There was no electricity. So think the kind of work they were able to do. This was all the Indian education, the perfection. See, if you see, this is the granite stone. If you see that knife has been pierced in the thigh and very clearly it is visible. So the hard stone, they were able to make it. This is again, they're all available to see. See the absolute cutting in the stone, which is visible even today. It is 1800 years back we are talking that rocks were cut. Now here I want to compare, we all talk of Pisa Tower. Yes, you have heard it? Say yes or no. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. But have you heard about Ratneshwar Temple of Banaras? Yes. Yes, sir. Yes. And what is the difference? The Pisa Tower is bent only 4 degree, whereas Ratneshwar Temple is having an inclination of 9 degree from the center. At the same time, the height of Pisa is just 54 meters, whereas Ratneshwar Temple is 74 meters, 20 meters more. But we give credit to the Pisa, not to our temple. Next, another thing which I wanted to, we all heard the word geometry. But from where geometry came? It is basically Sanskrit word geometry, okay, which is measuring the earth. And from there they picked up, and this was done 300 BC that in geometry was taught. Now, importance of 108. You might be seeing that picture. If you see from the distance between Earth and Moon is equal to 108 moon, diameter of moons. The distance between Earth and Sun is equal to 108 suns. You can see that multiplication. That is why so much important. Why it is not without logic. So that is how they were so accurate. Now coming to the aircrafts and vimanas, you will be surprised that we had
the lot of types of aircraft to fly from one place to another. Pushpak, as you might have heard just now, we have celebrated Diwali, that after killing Ravana, Ram came by Pushpak Viman. You know, in our Vedas, it is given that mercury was used as fuel, and you will be surprised. NASA scientists and some of the Indian scientists with the team, they are working on making this mercury as fuel, because all spacecraft, they have to have huge rockets because of the fuel. The compact fuel is not available, whereas mercury is a very, very compact. You know that in one bucket or one glass full of mercury is equal to 20 kilogram or so. So that will reduce. Now see the kind of sculptures they were able to make. This is a sculpture which is right now available in California University, and this is the sculpture of Vigraha of the Vishnu. It is 28,450 years old. Okay, so that old people were able to create this kind of. Now about books, and this is given, so many books and historical books were printed at that time. These are the main rishis who have contributed. Okay, now another, yes, this also I wanted to compare. We all know Eiffel Tower of Paris, yes or no? But you should be knowing even this iron pillar at where? Qutub Minar, Delhi. And you'll be surprised, the maintenance cost of Eiffel Tower is $50,000 every year. And this Maroli, it is called Maroli pillar also, iron pillar. The maintenance cost is zero. And not now, it has been there for hundreds of years. So the point is, they were knowing a lot of metallurgy at that time. Now, I would like to finish with this story. I'm sure everybody has heard Prithviraj Chauhan's name. Yes or no? Yes. Yes. So there is a story that Prithviraj Chauhan, he defeated Muhammad Ghaznavi. Yes or no? Yes, sir. So Yes, sir. he defeated him 16 times, but 17th time he was, Mahmud Ghaznavi was able to win. And the 16th time, Maharana Pratap caught him, and then Mahmud Ghaznavi used to say कि तेरे साथ क्या सलूक किया जाए. बोला एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ करता है, तो वो महाराणा प्रताप उसको माफ करके भेज देते थे. पर जब महमूद गजनवी ने उनको हराया, तो सबसे पहले महाराणा प्रताप की आंखें फोड़ दी और उनको जेल में डाल दिया. ये इतिहास है. अब उनके साथ में उनका एक दोस्त था जो राइटर था, चंद्रवरदाई. तो बसंत पंचमी के दिन इनको बोला गया था कि भाई इनका सर धड़ से अलग किया जाएगा सबके सामने. तो महमूद गजनवी अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था, वहां पे पूरी प्रजा इकट्ठी थी, सबके सामने उनको दोनों को लाया गया. अब महमूद गजनवी ने एक अपनी इच्छा जाहिर की कि यार मैंने सुना है आपको शब्द भेदी बाण चलाना के बहुत अच्छी कला आती है, तो मैं चाहता हूं अब तुम आज उसको दिखाओ. तो बताते हैं उस टाइम पे महमूद गजनवी अपनी सिंहासन में बैठा हुआ था. पृथ्वीराज चौहान को तीर और धनुष दिया गया और उसके पास में तवा था, महमूद गजनवी के पास में, जहां पे उसको वो तवे पे उसको तलवार से आवाज करनी थी. तब चंद्रवरदाई ने ये जो लाइन लिखी है ना, 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान. जब चंद्रवरदाई ने ये पंक्तियां बोली तो पृथ्वीराज चौहान ने अंदाजा लगा लिया कि वो कहां बैठा हुआ है, और उसने जैसे ही तवे पर तलवार मारी तो तीर से पृथ्वीराज चौहान ने सीधे महमूद गजनवी के सीने में से पार कर दिया. तो कहने का मतलब हमारी जो शिक्षा नीति रही है वो इस तरह की रही कि हर चीज व्यक्ति सीख सके, चाहे वो
तलवारबाजी हो, बाण हो, धनुष हो, सब कुछ उनको आना चाहिए. तो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू कन्वे. Any questions? Now the platform is open for questioning. I have finished my presentation. Good evening, sir. Sir, thank you. And I'm grateful. There are around 96 people who are there, and I'm really grateful to Dr. Damandeep for giving me this opportunity. And I appreciate. I hope this was some useful discussion. I could give it to you. Thank you so much, sir. It was a wonderful lecture. And thank you so much to the organizing team, sir. There is one request, sir. Please share the PPT as it will be very, valuable for us for further reference. Let me see how best it can be done. Okay, sir. Okay. Thank you. Yeah. Hello. Yeah. Please. Sir, with your permission, I want to correct something, sir. Please go ahead. Please. Sir, Prithviraj Chauhan fought with Muhammad Ghori. Ghaznavi came in 716 actually. And it's so much. 1191 and 92. Yeah. My history is a bit weak, but the incidence was right, I hope. No, incident right, but the persons were different, sir. Just I want to correct only. Muhammad Gauri, you are right, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. So nice of you, and I must appreciate that. They are our principal, Mr. Dwarika Prasad, sir. Doesn't matter. Yes, no, that's why. The fact should be. Atik bhai, the fact should Yes. be fact. Yes. And that is correction is. I really appreciate that. He has that much of knowledge. Thank you, Dwarika. Thank you, Atik bhai. Thank you so much. Thank you, sir. We must do the convey the right information. That is, I always feel like, and I always learn from the students, even in the school also. Okay, sir. Thanks, sir. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. Good evening. As we come to the close of today's enlightening webinar on revitalizing education through the Indian knowledge system, a path to holistic learning, it is my honor to extend a heartfelt vote of thanks on behalf of the Edu Club. A special note of appreciation goes to our distinguished speaker, Dr. Rajesh Sharma, for sharing his profound insights and expertise on the Indian knowledge system. Your thought provoking ideas and in depth knowledge have truly enriched our understanding and opened new perspectives for holistic learning. I would also like to express my sincere gratitude to our esteemed principal, Father John P.J., whose support added immense value to this event, making it even more impactful and memorable. I extend my heartfelt thanks to our Head of Department, Dr. Sheena Thomas Ma'am, for her valuable input, which greatly enhanced this webinar's quality and outreach. A special thank you to our coordinator, Sister Rohini Jadhav Ma'am, for her continuous commitment and cooperation. I am deeply grateful to our Edu Club in charge, Dr. Damandeep Kaur Ma'am, for her continuous encouragement and mentorship, which inspires us to deliver impactful events. I would also like to acknowledge and thank all the members of Edu Club for their hard work. Your dedication made today's event a smooth and successful experience. Lastly, my heartfelt appreciation goes to all the participants who joined us today. Your active presence and engagement were vital in making this session interactive and meaningful. As we take these ideas forward, may we all strive to incorporate the timeless wisdom of the Indian knowledge system into modern education, fostering not just academic growth but holistic development. Thank you once again, and we look forward to many more such thought-provoking sessions. I think some have raised the hand. Any question is there? Yes, sir. Anushka, Good evening. I don't have any problem. If there are questions, I can answer.
Sir, may I ask? Please go ahead. Okay. Good evening, all of you. सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने भी जो वैदिक एजुकेशन में मैंने भी मतलब पर्सनली भी मैंने बहुत पढ़ा है उसको और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको हम प्रेजेंट एरा में कैसे इसको प्रासंगिक बना सकते हैं, जैसे प्रेजेंट। हाँ, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट है और हम उसको देखते हैं तो बिल्कुल अलग चीजें दिखाई दे रही हैं और बाकी लोगों के हमारे लिए आपको बहुत आसान सा मैं बताता हूँ कि ये जो वैदिक शिक्षा थी वो पूरी की पूरी अनुभव पर आधारित थी। तो अभी NEP 2020 को आप देखेंगे तो उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात आ रही है, अनुभव के साथ। आपने कोई एक पढ़ा फिर उसको करिए और एक बार में अच्छा नहीं हो रहा है उसको दोबारा करिए और उसी की मास्टरी करते जाइए। तो वैदिक काल में जो भी कुछ सिखाया जाता था उसमें एक मास्टरी कराई जाती थी सब बच्चों और हर चीज हर एक को न करके जो उसके लायक होता था, जैसे कि उसकी एप्टीट्यूड है, उसमें डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसमें उस तरह की क्वालिटीज है, वो वही उसको सिखाया जाता। तो इस तरीके से हम आज भी उसको अगर इम्प्लीमेंट करें हम स्कूल लेवल से। हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने 8th 9th 10th क्लास में कभी बच्चे को ये पूछा नहीं कि तुम्हें क्या करना है और उसको बस सबको डिग्री करानी है। डिग्री करके अब क्या कर रहे हैं, वो सब सड़क पे आ गए। तो वो वैदिक काल में कोई एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं थी बिल्कुल। मैम रेखा में समझ में आया आपको? जी सर, थैंक यू सर। Thank you. Okay. So shall we wind up? I think all are done with their questions. So we are winding up the session. Thank you, sir, and thank you to all Thank the you so much. participants. Yeah. God bless you all. Yeah. All the best and Happy New Year. Yeah. Thank you sir, thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye everyone. Bye bye sir.